mean high water spring tide 4 meters, charted depth 10 meters. Find the earliest time when a vessel with 12-meter draft can sail out of Bombay on 5th March 1992 to pass safely with a minimum 1 meter clearance under the bridge, and what will be her UKC. Maximum height of the vessel from keel to top of the mast is given as 62 meters. It's a question from one of your past MMD exams for second mates. Incidentally, the previous question was also from the past papers. This question, which looks little confusing, can become very simple if you can transfer this information onto an appropriate diagram. Now, since we are given the charted depth, so we can start with the seabed. Let this line represent the seabed. As the charted depth given is 10 meters, that means the chart datum is 10 meters above the seabed. So we go to 10 meters above the seabed, and what we get is the level of the chart datum. Why? Because the charted depth is measured from chart datum. Then we are given the height of mean high water spring tide, and we know all tide heights are given from chart datum. So that means if we go 4 meters above the chart datum, we shall have the level of the mean high water spring. Now, next we have is the height, charted height of the bridge, which is 50 meters. And in Tide video 1, we learned that all the charted heights and elevations are with respect to mean high water spring. So if we go 50 meters above the mean high water spring level, we shall get the bridge. So we go 50 meters above this, and what we get there is the bridge. Now, if we add all these three components, that shall give us the height of the bridge from the seabed. So seabed to bridge height becomes then 64 meters. Question wants the minimum mast clearance from the bridge, under bridge clearance of 1 meter. That means our mast cannot cross this line. So this is the highest point to which our mast top could be reaching when we are crossing the bridge. Now, mast to keel is given as 62 meters. Top of the mast to the keel is given as 62 meters. So if the top of the mast is in line with, touching this line, then if we come 62 meters below this, we shall have the keel of the vessel. And the vessel is then like this. And we have the mast. So top of the mast to keel is 62 meters. So that means from bridge to the keel becomes 63 meters. Bridge to the seabed is 64 meters. Therefore, this whatever is left here is the under keel clearance, and that under keel clearance is obviously then only 1 meter. Okay, so beta, we had done up to here in the last lecture. So any doubts in your mind up to here, beta, in this diagram? Okay, great. So let's proceed ahead then. Let's see the calculation. So we now know what is the UKC. UKC was one of the items which was asked to us. So we know the UKC will be 1 meter at this particular instance. Let's move ahead. Now we also have the draft of the ship. So from the keel, if we go 12 meters up, we'll get the sea level because the draft is given as 12 meters. So this gives us the sea level. Once we have the sea level, the depth of the seabed from the sea level becomes the depth of the sea at that point of time, which becomes 12 plus 1 as 13 meters. And what does the depth of the sea comprise of? It comprises of the charted depth and the height of the tide.
So obviously this depth of the seabed shall be uh, a charted depth, which is 10 meters, and this height, which is the height of tide. So that means when the vessel crosses this bridge with the under bridge clearance of 1 meter, that time the height of tide required shall be 3 meters and UKC then would be 1 meter. So once this entire information has been put into this diagram, now our question translates simply to find the earliest time on 5th March when the height of tide is 3 meters. And at that point of time, the UKC shall be 1 meter. Okay, so is this clear, beta? The question is simplified now. We need to find the earliest time when the height of tide is 3 meters. That satisfies our criteria. Yes, sir. Very good, beta. आगे चलें? Yes, sir. Okay, great. And the air draft of the vessel, obviously, in this case is 50 meters, which is the distance from sea level to the top of the mast. So we are now required to find the earliest time on 5th March 92 when the height of tide is 3 meters. We go to the geographical index of ATT volume 2, which is alphabetically arranged. We locate Bombay in it. We find Bombay is in capital letters and also in bold, implying it's a standard port. Predictions are on page 153. We reach page 153 of ATT volume 2, and from there we pick up the prediction, tide predictions for 4th and 5th March. We've just picked up 4th March also because the question is about earliest time. Whether it is going to be useful or not, that we can subsequently take a call upon. Okay, so beta, you can check out this data in the tide tables and note it down. Let me know if you have any doubts anywhere in finding this data. सर ये 4th मार्च को क्यों साथ में लिया हमने? Just for our this thing beta, in case required, okay, अगर चाहिए होगा तो फिर हम इसको pick up कर लेंगे. If not required, then we will leave this data. कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम पूछा जाता है तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको उससे पहले वाले डेट में या लास्ट वाले डेट में से एक टाइम को पिकअप करना पड़े. ओके, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट अस से हमारा जो 5th का पहला हाई वाटर है 0024 पे है अभी, अगर यही होता 0524 पे 0524, ओके, तो ऐसा पॉसिबल है कि हमें 4th की लास्ट एंट्री को पिकअप करना पड़ता. So that is why both these dates are picked up. We will see whether it is required or not. Did you get it, beta? Yes, sir. Okay. So shall we move ahead now? Yes, sir. Okay. Whether it is going to be useful or not, that we can subsequently take a call upon. Now we need the earliest time on 5th March 92 when the height of tide is
3 meters. These were the predictions for 4th and 5th March that we had picked. Now, on inspecting this, we see that at 0024 hours, it's high water, which is more than 3 meters, and then it's a ebbing tide. So obviously, during the ebb, when it becomes 3 meters, that is the earliest time when the vessel shall have a under bridge clearance of 1 meter. Why? Because if the tide is higher than 3 meters, then the under bridge clearance shall obviously be reduced. So therefore, we'll have to find out when the height of tide is 3 meters between 0024 when it is high tide and 0641 when it is low tide. So these are the two tide timings and heights which are of interest. And obviously, what we picked up for 4th is not going to be used. So now we have the interpolation diagram. We have high water at 0024, height 4.3 meters, low water at 0641, height 1 meter. Duration of tide obviously is then 6 hours 17 minutes, and height range of tide is 3.3 meters. Now we go to this diagram on this side and we start plotting. On the low water scale, we mark the low water height. We are using the larger scale 0 to 4 and 0 to 7. So we mark off 1 meter of low water height. On the upper one, we mark the high water height 4.3. We join them and we get the interpolation line. Okay, so beta, you can note this down and you can mark the interpolation line in your diagram. Let me know once you are comfortable up to here. अगर इस क्वेश्चन में find the last time when a vessel with particular draft can sail out, तो आप क्या कौन सा टाइमिंग लेते थे? Okay, so you are saying कि क्वेश्चन में अगर लिखा होता find the last time on 5th when the vessel can sail out keeping 1 meter clearance from the bridge, right? Yes sir, ये earliest और last time में confusion हो रहा है काफी. बेटा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो कोई डाउट ही नहीं है. हमने ये देखा कि हमारी कंडीशन 3 मीटर पे सेटिस्फाई हो रही है, 3 मीटर पे. तो 5 तारीख को 3 मीटर की हाइट ऑफ टाइड सबसे पहले कब आएगी? कौन सी दो वैल्यू के बीच में आएगी बताओ? अर्लीस्ट में तो यही टाइमिंग है अभी जो हमने ले रखी है. राइट बेटा, यही टाइम के बीच आएगी ना अर्लीस्ट. अब Yes, अगर sir. बोलो कि हमें लेटेस्ट टाइम चाहिए कि भाई 5 तारीख को लेटेस्ट कौन सा टाइम है जिसमें हमारा जहाज इस ब्रिज के नीचे से 1 मीटर की क्लियरेंस के साथ निकल जाए. ओके हाँ सर, इस क्वेश्चन में तो दिख रहा है जैसे फिर ये 1242 के बाद और 1832 के बीच में लेंगे हम लोग. राइट. ठीक है सर. बाकी क्वेश्चंस किए थे सर, उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, इसमें तो चलो ठीक है. ओके. अब बेटा जो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा ना, वो क्वेश्चन में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देगा दैट इट विल मेक सेंस. ओके, ऑटोमेटिकली इट विल मेक सेंस. जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही होगी ना, आप वो मुझे बताओ बेटा. आइदर पुट इट ऑन द ग्रुप और टेल इट टू मी हियर इन द क्लास. हम उसको डिस्कस करेंगे. हाँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगा सर. हाँ, ग्रुप में डालना बेटा. वी विल डिस्कस इट आफ्टर दिस, वी कैन डिस्कस. अब इसी सवाल में बेटा अगर आप बोलो, केस बता रहे हाँ गो अहेड बेटा. जिसमें कि हम 4 को यूज करेंगे. आस्क अगेन, व्हाट्स योर डाउट?
सर आपने जैसे 4 और 5 बोला था कि लेके आना है हमें, तो वो केस बता रहे थे जिसमें कि हम 4 को यूज करेंगे। सेम सिचुएशन में अगर अर्लीस्ट टाइम पूछा होता तो 4 को कब यूज कर। तरह से 4 मीटर्स एंड फिफ्थ को 0500 पे 0500 पे लो टाइड हुआ। लो टाइड की वैल्यू कितनी थी? 1 मीटर। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू मानी है बेटा हमने, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमें 4 तारीख में भी जाना पड़ सकता है। ओके ओके सर। सर इस केस में तो अगर 3 मीटर जो होगा वो 5 तारीख को होगा अर्लीस्ट टाइम पे, इस जो आप बता रहे हो अभी। इस केस में 5 बजे से पहले 3.0 मीटर का टाइड आ जाएगा, राइट? यस 5 तारीख सर। को और 5 बजे से पहले 3 मीटर का टाइड आ जाएगा। अब हमें यह पता करना है कि वो 3 मीटर का टाइड कितने बजे आ रहा है, यही तो चाहिए हमें सवाल में। अब अगर हमें यह पता करना है कि ये किस टाइम पे आ रहा है, तो कौन सी दो वैल्यू के बीच में इंटरपोलेट करना पड़ेगा बेटा? सर 4 और 5 के बीच में। वेरी गुड, फोर्थ की लास्ट वैल्यू और फिफ्थ की फर्स्ट वैल्यू। सो ये एक सिचुएशन है जिसमें आप देख सकते हो कि हमें पिछली डेट की वैल्यू को भी यूज करना पड़ सकता है। फॉर्चुनेटली जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी केस में पड़ भी सकती है, इसीलिए यहाँ पे हमने दो डेट्स की वैल्यू को पिक कर लिया था। अगर ज़रूरत पड़ती तो हम यूज़ कर लेते। ओके इसे सर। और सर इसे हाँ, बोलो बेटा और और बोलो। क्या, जो अर्लीस्ट टाइम अगर हमें पूछा होता है तो हम हमेशा राइजिंग टाइड कंसीडर करते हैं। अब वो यूकेसी के केस में है बेटा। अगर आपसे यूकेसी के साथ अगर वो बोलता है जी 1 मीटर की यूकेसी चाहिए, फाइंड द अर्लीस्ट टाइम टू सेल आउट। ओके, ओके। 1 मीटर की यूकेसी चाहिए, फाइंड द अर्लीस्ट टाइम टू सेल आउट, उस केस में राइजिंग टाइड को यूज किया जाता है। अगर आपको उसने ब्रिज क्लियरेंस पूछा हो, ब्रिज क्लियरेंस, कि भाई इतनी क्लियरेंस हमें चाहिए, फाइंड द अर्लीस्ट टाइम टू सेल आउट, उसमें फॉलिंग टाइड को पूछ। हमने इस डायग्राम में देखा कि अगर हमारी 3 मीटर की हाइट ऑफ टाइड है तो 1 मीटर की क्लियरेंस हमें मिल रही है। ओके, अब यस सर। लेट अस से ये 3 मीटर की हाइट जो है ये आ रही है, मान लेते हैं सुबह 4 बजे आ रही है, 0400, करेक्ट? और यस। ये फॉलिंग टाइड है, फॉलिंग टाइड। ओके, सो 3:50 पे जो हाइट ऑफ टाइड है वो 3 मीटर से ज्यादा होगी, क्योंकि फॉलिंग टाइड है ये, राइट? यस सर। 3:50 पे हो सकता है ये हाइट ऑफ टाइड हो 3.1 मीटर, तो हमारी ब्रिज क्लियरेंस अभी बनी नहीं, ब्रिज क्लियरेंस कम है। एग्जैक्टली 4 बजे हाइट ऑफ टाइड हो गई 3 मीटर, हमारी ब्रिज क्लियरेंस बन गई 1 मीटर की। अब ये अर्लीस्ट टाइम है जब हम निकल सकते हैं। ओके, अब अगर आप फ्लड टाइड का केस ले लो, मान लो फ्लड टाइड हो रहा है, फ्लड टाइड, फ्लड टाइड में कभी भी अर्लीस्ट टाइम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अभी देखते हैं। लेट अस से हम किसी पोर्ट, इस पर्टिकुलर पोर्ट में हैं और फ्लड टाइड है, सुबह के 4 बजे का टाइम है, टाइड की हाइट जो है वो 3 मीटर है, तो 3 मीटर का मतलब है हम निकल सकते हैं। अगर आधे घंटे पहले की वैल्यू देखें, 3:30 की वैल्यू देखें, तो फ्लड टाइड का मतलब है कि आधे घंटे पहले की वैल्यू इससे कम होगी, 2.5 मीटर की वैल्यू होगी टाइड की, 2.5 मीटर। एक अब अगर टाइड 2.5 मीटर है तो क्लियरेंस तो बेटा फिर भी बनी रही है ना, क्लियरेंस तो 1.5 मीटर हो गई है, सो हम अभी भी निकल सकते हैं। ओके सर। इस केस में हम बस ब्रिज क्लियरेंस देख रहे हैं कि 1 मीटर कब होगा। राइट, जब भी कभी ब्रिज क्लियरेंस की बात आएगी, अर्लीस्ट टाइम पूछा जाएगा, तो फॉलिंग टाइड में ही मिलेगा। ओके सर। सर क्वेश्चन ओके, में एक्चुअली दोनों चीज दी है ना कि 1 मीटर क्लियरेंस और 1 मीटर यूकेसी। नहीं बेटा, 1 मीटर यूकेसी चाहिए नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया है कि यूकेसी कितनी होगी। देखो, टू पास सेफली विद मिनिमम 1 मीटर क्लियरेंस अंडर द ब्रिज, ये कंडीशन मीट करनी है। एंड व्हाट विल बी हर यूकेसी, उन्होंने बोला नहीं है कुछ कि हमें इतनी यूकेसी मेंटेन करनी है, उन्होंने सिर्फ पूछा है कि इस टाइम पे यूकेसी कितनी होगी। ओके सर, क्लियर है सर अब।
हाँ, अगर वो हमसे ये बोलते कि भाई 1 मीटर की यूकेसी मेंटेन करनी है, ओके, सो फिर उस केस में क्वेश्चन बदल जाता बेटा। ये सर फिर हम उसमें राइजिंग टाइड हो जाते हैं ना सर। राइट, फिर उसमें राइजिंग टाइड हो जाता, क्योंकि फॉलिंग टाइड में आपने अगर 1 मीटर की यूकेसी को लिया तो फिर उस टाइम के बाद तो आप जा ही नहीं पाओगे ना, आपकी यूकेसी कम हो जाएगी। तो लेटेस्ट टाइम मिलेगा फॉलिंग टाइड में यूकेसी के कंपैरिजन में। ओके सर। ओके ओके, सो बेटा यहाँ तक इंटरपोलेशन लाइन तक एवरीथिंग, एवरीबॉडी कंफर्टेबल? सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर। हाँ, बोलो बेटा। जैसे कि ज्योग्राफिकल इंडेक्स में मुंबई और बॉम्बे दो अलग अलग चीज़ है। क्वेश्चन में मुंबई दिया हुआ है हमें और ज्योग्राफिकल इंडेक्स में बॉम्बे है। ऐसी कोई हम्म, सिचुएशन भी आ जाएगी सर एग्जाम में? आनी नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि जो मुंबई नाम चेंज हुआ था, बॉम्बे टू मुंबई, दैट हैपेंड आफ्टर 1992। तो आपके केस में यहाँ पे बॉम्बे ही होगा, मुंबई नहीं होगा। ओके सर, बट किसी और दूसरे पोर्ट पे, कोई यूरोप का पोर्ट है या फिर कोई भी दूसरा पोर्ट जिसमें ऐसे हो गया हो, तो हम्म, हम कैसे ढूंढेंगे? कंफ्यूजिंग होगा ना सर ये तो बहुत। बेटा आपको तो जो नाम क्वेश्चन में दिया गया है उसी नाम से जाके पोर्ट को ढूंढना है, और आपको वो पोर्ट ज्योग्राफिकल इंडेक्स में मिल जाएगी, आपने उसे वहां से पिक कर लेना है। इसमें कंफ्यूजन कहाँ आएगा बेटा, बताओ मुझे। सर जैसे कि एक क्वेश्चन जो हमने शायद सबसे पहला किया था, उसमें क्वेश्चन में मुंबई दिया हुआ था और मैं मुंबई ढूंढ रहा था। मैंने तीनों वॉल्यूम में ढूंढा, कहीं पे भी नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने बॉम्बे सर्च कौन किया। बेटा, कौन सा क्वेश्चन जो हमने किया था क्लास में? यस सर। मैं पीछे ले जाता हूँ बेटा। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद वी विल लुक एट मुंबई। वी विल सी दैट क्वेश्चन, ओके? ओके। ओके सर। अदरवाइज अदरवाइज वी विल लूज ट्रैक। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमने अभी इंटरपोलेशन लाइन बना ली है। बेटा इफ एवरीबडी इज ओके, शेल वी मूव अहेड नाउ, इंटरपोलेशन लाइन से आगे चलें? यस सर। ओके, ठीक है बेटा। We get the interpolation line. Now we need the time when the height of tide shall be 3 meters. So 3 meters is the required height of tide. From 3 meters, we come vertically downwards till we hit the interpolation line. Once we have hit the interpolation line, we go to the right horizontally and we decide whether to stop on the left or the right. Now, on inspecting our tides, we find that it's a ebbing tide. That means our event or occurrence shall be after high water. If it's after high water, that means we go to the right side curve. So we go horizontally from here, and up to what level? We go for a duration of 6 hours 17 minutes by visual interpolation. So it will be between 6 and 7, 6 hours 17 minutes. And from there, we come vertically down till we hit the baseline here. And on the baseline, we read off the interval. And this interval is 2 hours 48 minutes after high water. Okay, so beta, have a good look at this working, and let me know any doubt coming up to 2 hour 48 minutes. सर 2 hour 50 minutes है। Perfectly fine beta, 2 hours 50 is okay. ओके सर। Okay. सर इसमें अभी कर रहा है एबिंग हो रही है, तो एक वो समझाना सर। बेटा अपना डाउट बताओ मुझे, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है? आप ये पूछना चाहते हो कि हम यहाँ पे क्यों नहीं रुके, हम राइट साइड में आके क्यों रुके हैं जरा ग्राफ में? हाँ सर, हाँ सर। ओके क्योंकि ओके, टाइम बाद का है इसलिए आ गया ना वो आगे। मैं बेटा बताता हूँ अभी आपको।
देखो बेटा, ये जो पहला वाला ग्राफ आप देख रहे हो ना, पहला वाला जो लेफ्ट साइड पार्ट है हमारे ग्राफ का, इसको बोलते हैं फ्लड टाइड। फ्लड टाइड मीन्स पानी का लेवल बढ़ रहा है। और जो राइट साइड वाला पार्ट है हमारे ग्राफ का, इसको हम बोलते हैं एब टाइड। एब टाइड का मतलब है कि पानी कम हो रहा है। तो हमें अपने फिगर्स में देखना है कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर आप हमारी वैल्यूज में जाओ तो आप देखो 0024 पे हमारा हाई वाटर था और 0641 पे हमारा लो वाटर था। तो ये कौन सा टाइड है बेटा? राइजिंग टाइड है या फॉलिंग टाइड है? सर फॉल हो रहा है। फॉल हो रहा है। जब भी कभी टाइड फॉल होगा तो इस ग्राफ के राइट साइड वाले कर्व को ही यूज करेंगे। राइट साइड वाला कर्व फॉलिंग कर्व है और लेफ्ट साइड वाला कर्व राइजिंग कर्व है। और सर तीनों में से ड्यूरेशन वाली लाइन कौन सी लेंगे? ओके, सो वेरी गुड बेटा। अब देखो, हमने 3 मीटर से शुरू किया, हम नीचे आ गए इंटरपोलेशन लाइन पे, फिर इंटरपोलेशन लाइन से हम हॉरिजॉन्टली चलते गए। अब जब हम हॉरिजॉन्टली यहाँ पे पहुंचेंगे तो हमें 3 लाइनें मिलेंगी, 1 2 3। आर यू एबल टू सी द कर्सर बेटा? यस सर। सो अब बेटा, इसमें जो सबसे पहली लाइन हमें मिल रही है वो है 5 आवर्स की लाइन। देखो नीचे 5 आवर्स लिखा हुआ है। जो दूसरी लाइन मिल रही है वो है 6 आवर्स की लाइन, और जो तीसरी लाइन मिल रही है वो है 7 आवर्स की लाइन। अगर हमारी ड्यूरेशन 5 घंटे की होती तो हम पहली लाइन पे रुक जाते। अगर हमारी ड्यूरेशन 6 घंटे की होती तो हम सेकेंड लाइन पे रुक जाते। और अगर 7 घंटे की होती तो हम तीसरी लाइन पे जाके रुकते। हमारी ड्यूरेशन यहाँ पे कितनी है बेटा? 17 minutes। वेरी गुड, 6 आवर 17 मिनट। तो जो मिडल वाली लाइन है वो 6 घंटे की है, जो राइट साइड वाली लाइन है वो 7 घंटे की है। हमें 6:17 पे रुकना है जाके। अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 1/4 ऑफ द, और 1/4 और 1/3 ऑफ द टोटल गैप। ओके, तो आप देखो हमने यहाँ विजुअली अंदाजे से यहाँ पे 1/3 या 1/4 गैप लिया और इस पॉइंट से फिर हम लोग वर्टिकली नीचे आए। दिस इज व्हाट वी हैव डन। ठीक है सर। ओके, सिंस दिस इज ए अप्रोक्सीमेशन, ये पॉइंट थोड़ा बहुत आगे या पीछे भी जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि टाइम में ±5 मिनट तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। ±5 मिनट्स इज ओके। जब पेपर चेक होते हैं बेटा तो ये चीज़ एग्जामिनर को पता होती है, पेपर चेकर को पता होती है दैट दिस मच एक्यूरेसी इज अलाउड इन द वर्किंग। ओके बेटा, क्लियर? Very good. Let's move ahead then. We have the interval now. Interval after high water is 2 hours 48 minutes. So the height of tide shall be 3 meters at an interval of 2 hours 48 minutes after high water. And what is the time of high water? 0024. Therefore, the time of required tide shall be 0312 hours. That means 2 hours 48 minutes after 0024, and that time is 0312 hours. Okay. So this brings us to our answer beta. 0312 is our answer. This is the earliest time on 5th March when the vessel can sail out, keeping this much of bridge clearance. अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये जहाज 3:12 से पहले उस ब्रिज को क्रॉस करता है तो क्या होगा? लेट अस से 3 बजे अगर ये क्रॉस करेगा तो क्लियरेंस का क्या होगा बेटा? कम होगी, ज्यादा होगी, क्या होगा? ज्यादा होगी सर पहले। ज्यादा होगी सर। ओके, सो 3 बजे अगर हम इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो क्लियरेंस ज्यादा होगी ब्रिज से? नो सर, ब्रिज से कम होगी और यूके से ज्यादा होगी। वेरी गुड, ये दूसरा ऑप्शन आ गया बेटा, कम होगी। सो कौन बनेगा नेविगेटर?
ये दो ऑप्शन आपके सामने हैं। 3 बजे क्लियरेंस कम होगी 1 मीटर। On 6th March 1992, minimum height of tide required to sail out safely is 1.5 meters. Find the last time to sail out during the AM or the forenoon hours when you have the height of tide as 1.5 meters. We shall use the same information. Required time of height now is when tide is 1.5 meters on 6th March at Jenbrug during the following tides. Why? Because it's the last time. Last time of sailing has to be on the ebb tide. And we know it's ebb tide in the forenoon session. Why? Because high water was at 8:45, low water is at 17:31. So we use the Antwerp curve. Why? Because that's the standard port. We have the high water at 8:45, height 2 meters, low water 17:31, height 0, duration of tide 8:46, range of tide 2 meters. Now we go to the diagram, we mark off the interpolation curve. You can see the interpolation curve coming up here. Now the required height of tide is 1.5 meters. So we start from out here. Required height of tide 1.5 meters. We come vertically down to the interpolation line. And then we turn towards the curve. Now which side do we stop? Now it shall be after high water. Why? Because it's a ebb tide. So we go to the right of the curve and don't stop to the left. Which curve do we go to? Our range is 2 meters. Neap range is 4 meters. So we go up to the neap curve. Then we turn vertically downwards and hit the baseline. And what do we read here? We read here that the interval is 1 hour 40 minutes after high water. That means the time when the height of tide shall be 1.5 meters on the ebb tide in the morning shall be 1 hour 40 minutes after high water. And what is the time of high water? 8:45. So therefore the last time when the vessel can sail out with a height of tide of 1.5 meters shall be 8:45 plus this interval of 1 hour 40 minutes, and that time shall be 10:25 hours. Okay, so just have a good look at this working beta. Let me know any doubts which come in your mind. सर एक बार ये अर्लीस्ट और लास्ट टाइम वाला बता दो सर, ये यूकेसी के रेफरेंस में दे रहे हैं ना सर हम? बेटा एक तो आपको डाउट है अर्लीस्ट और लास्ट में, वो मैं अभी बता देता हूं आपको। ध्यान से सुनना अभी। सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखें। उन्होंने हमसे ये पूछा है फाइंड द लास्ट टाइम टू सेल आउट ड्यूरिंग द AM आवर्स। मीन्स 12 बजे से पहले लास्ट टाइम कौन सा है जिसपे हम लोग सेल आउट कर सकते हैं। करेक्ट। अब हमें यहां पता चला कि 10:25 आवर्स पे हाइट ऑफ टाइड 1.5 मीटर है जो हमें चाहिए थी। अगर 10:25 के 10:26 हो जाते हैं तो बेटा आप मुझे बताओ कि हाइट ऑफ टाइड 1.5 से कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी सर। कम हो जाएगी, हो सकता है 1.4 हो जाए। तो अगर ये कम होगी तो हम सेल आउट नहीं कर पाएंगे। राइट बेटा? यस सर। सो 10:25 के बाद 12 बजे तक सेल आउट करने के लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 10:25 पे हाइट ऑफ टाइड 1.5 मीटर होने वाली है। अब बेटा मुझे ये बताओ कि 10:25 से पहले 10:24 पे हाइट ऑफ टाइड 1.5 मीटर से कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी सर। ज्यादा होगी। 10:24 पे हाइट इससे ज्यादा होगी, 1.51 हो सकती है, 1.6 हो सकती है। तो उसमें हम सेल आउट कर सकते हैं? यस सर। बिल्कुल सही है, उसमें सेल आउट कर सकते हैं। कभी भी हाइट ऑफ टाइड 1.5 मीटर से ज्यादा होगी तो हम सेल आउट कर सकते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ 10:25 से पहले तो हम कभी भी सेल आउट कर लेंगे, लेकिन 10:25 के बाद सेल आउट नहीं कर पाएंगे। यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द लास्ट टाइम टू सेल। दैट इज व्हाई द आंसर इज 10:25। अब ये बात क्लियर हुई बेटा? सर ये तो क्लियर हो गया। जैसे कि ओके। क्वेश्चन में अगर पिछला पार्ट ना दिया होता हमें, ये तो जो रेफरेंस दिया हमने पिछले उससे दिया है, हम स्टार्टिंग से बिल्कुल क्वेश्चन करते हैं, फिर मेरे को कैसे पता चलता कि मैं ये दोनों ही इंटरवल दूंगा सर? बेटा उस केस में ना आपको सारे इंटरवल लेने पड़ेंगे। आपको 6 मार्च 1992 के सारे टाइम लेने पड़ेंगे। इसमें तो ये एक ही क्वेश्चन से उन्होंने सारे मेथड समझाए हैं, इसलिए ये 2 टाइम के साथ हमारा काम चल गया। पर आप सही बोल रहे हो, अगर इस क्वेश्चन में शुरू से ही ऐसा दिया होता तो हम चारों के चारों टाइम जो है 6 मार्च के वो नोट करते और उनके टाइट्स निकालते। ओके सर। ओके, वेरी गुड। और बताओ बेटा, और क्या डाउट आ रहा है? सो क्लियर बेटा, एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस? सो अब आप सेकेंडरी पोर्ट का टाइट निकाल सकते हो, ATT1। सर इसमें अर्लीस्ट बोलते तो यस सर। अर्लीस्ट टाइम टू ओके ओके। अब बेटा इस क्वेश्चन सर में अगर वो, हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात, अर्लीस्ट टाइम अगर पूछा जाता तो अर्लीस्ट टाइम के लिए हमें बेटा 8:45 से पहले का भी जो टाइड है ना वो भी निकालना पड़ता, क्योंकि जो अर्लीस्ट टाइम आता है वो आता है राइजिंग टाइड में, और राइजिंग टाइड होगा 8:45 से पहले। 8:45 पे तो हाई वाटर आ रहा है, करेक्ट बेटा? सर सो यस सर। हम 8:45 से पहले का टाइम निकालते, उसकी हाइट भी निकालते, और फिर हम उन दोनों के बीच में देखते कि 1.5 मीटर की हाइट कहाँ पे मिल रही है। दैट वुड बी द अर्लीस्ट टाइम टू सेल आउट। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। वेरी गुड बेटा, ग्रेट। और बताओ अगर और कोई डाउट आ रहा है? ओके बेटा, very good. So having done this, now we are ready to move forward. So इसमें हमने बेटा ATT1 एडमिरल्टी टाइड टेबल 1 इसकी सेकेंडरी पोर्ट का हाइट ऑफ टाइड निकालना सीखा है। हमने सबसे पहले तो ये सीखा कि सेकेंडरी पोर्ट के डाटा को कैसे कैप्चर करते हैं, हाइट डिफरेंस टाइम डिफरेंस लेते हैं, इंटरपोलेशन करते हैं, तो हमारे पास सेकेंडरी पोर्ट के टाइम्स आते हैं और हाइट्स आ जाती हैं। फिर हमने ये भी देखा कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए निकालना हो हाइट को तो हम स्टैंडर्ड पोर्ट का ग्राफ यूज़ करके उसे निकाल सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि अगर हमें कोई हाइट दे दी जाए और उसका टाइम निकालना हो तो वो भी हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। सो विद दिस वी बेसिकली कंप्लीट द एडमिरल्टी टाइड टेबल 1। सेकेंडरी पोर्ट, स्टैंडर्ड पोर्ट, ये कंप्लीट हो गया है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है एडमिरल्टी टाइड टेबल्स वॉल्यूम 2 एंड 3, इनकी सेकेंडरी पोर्ट्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो शैल वी मूव ऑन टू दैट क्वेश्चन बेटा?
Yes, sir. ओके, सो जस्ट कीप द टाइट टेबल्स क्लोज टू यू। हम लोग अभी एक पर्टिकुलर पोर्ट एक क्वेश्चन पिकअप करेंगे और पर्टिकुलर पोर्ट का जो डिटेल है वो निकालेंगे। दिस क्वेश्चन इज इजियर देन ATT1। ATT1 में हमने बहुत इंटरपोलेशन की है, वहां पे इंटरपोलेशन कम हो जाती है। ओके, अभी आप देखोगे डिफरेंस। ATT2 एंड 3 का क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा सिंपल है। सो let me show you the ATT2 and 3 secondary port. Okay. Okay, beta. So we have a question for ATT2 and we want to find the time and height of high water and low water on 10th April 1992 at Navlakhi. So can you open up the tide table and tell me where does this Navlakhi come in the geographical index? What is the number of this port? Sir, 4331, sir. Very good, beta. Great. Let's see it here also. Waters, we shall also take examples for the secondary ports in the non-European waters. So let's take this example. Find the times and heights of high water and low water on 10th April 1992 at Navalaki, and Navalaki is in Admiralty Tide Tables Volume 2. So we go to the geographical index of Volume 2, ATT Volume 2, which is in alphabetical order. We reach Navalaki, and we find Navalaki is not in bold and capitals. So it happens to be a secondary port whose number is 4331. So Navalaki port number 4331 is found to be a secondary port. Now beta, with this number, can you go to part 2 and see कि ये जो नवलखी पोर्ट है इसका स्टैंडर्ड पोर्ट कौन सा है? Yes, sir. Yes, sir. Once you find out, let me know. कराची सर। Very good, beta. सर बंदर शाहिद राजे। बंदर शाहिद कराची, 2 ऑप्शन आ गए बेटा, और बताओ। Any other option?
बाकी लोगों को मिला बेटा? सबको कराची मिल बॉम्बे। रहा है? सर बॉम्बे सर। वेरी गुड। सो थर्ड ऑप्शन आ गया बॉम्बे। हाँ सर बॉम्बे में आ रहा है। यस सर, बॉम्बे आ रहा है। बॉम्बे आ रहा है। ये ऑल राइट, ठीक है बेटा, लेट्स सी। from the geographical index of ATT volume 2. Go to ATT volume 2 part 2 to the page which contains details for Navalaki, where the information is in ascending port number. So we reach 4331. So here, this is the page which contains data regarding the time and height difference. On this page, here we have 4331 Navalaki. We go to the top of this subsection here and we find that Bombay happens to be the standard port for Navalaki. सो बेटा जिनको और पोर्ट मिल रही थी, आर यू ओके नाउ विद बॉम्बे? डाउट सॉर्ट आउट हो गया या अभी भी है? ये सर। ओके, वेरी गुड बेटा. So we have the secondary port Navlakhi. We know its standard port is Bombay. Let's proceed ahead now. And port number for Bombay happens to be 4359, which is given here. Seasonal correction for these ports is from the adjacent page, and that has been now brought in here on the screen. So we have the seasonal correction, which applies to this set of ports. And now we identify the information from this page, which we are going to use further, and we'll zoom it in and we'll use it for our further working. So beta, have a look at the seasonal correction also. 4331 और 4359 इन दोनों की seasonal correction हमें चाहिए. So just see, is it there on the same page or the next page? नेक्स्ट पेज पे है सर. Very good बेटा, very good. दोनों numbers की seasonal correction available है? यस सर. Very good बेटा. So in this case you will see दोनों की जो सीजनल करेक्शन है वो अलग अलग कॉलम में दी गई है, राइट? यस सर. राइट, वेरी गुड. सो लेट्स प्रोसीड अहेड. The information we shall be using would be for the standard port Bombay. You can see it here. For the secondary port Navalaki, which is here, height and time differences, and also the seasonal corrections. So now we have on the screen the relevant information which is zoomed in. We have the information for the standard port Bombay. We have the data for Navalaki, and we have the seasonal corrections. Here we see that the time zone for Navalaki happens to be minus 0530 hours. Tide is required for 10th April 1992 at Navalaki. Time difference in tides between the standard and the secondary ports may cause a change in dates of the corresponding tides between the standard and the secondary port. So we'll have to be wary of this fact. So it is better to also consider the tide timings at the standard port over the dates on either side of the date in question. That means one day before the date required and one day after that, and then we can rule out whichever tides are not applicable. Okay, so everybody comfortable with these three data items beta? Standard port Bombay, secondary port Navlakhi and seasonal correction. ये तीनों आपको मिल गए हैं? Anybody having any problems up to here? नो सर, ओके. वेरी गुड बेटा. अब बेटा हम नेक्स्ट जाएंगे बॉम्बे पोर्ट के डेली पेज पे और वहाँ पे हम 10th अप्रैल 1992 ये वाली डेट को देखेंगे. हो सकता है इससे एक दिन पहले या एक दिन बाद के टाइम भी हमें लेने पड़े. सो लेट अस गो टू द बॉम्बे पोर्ट पेज एंड फाइंड आउट द 10th अप्रैल 1992.
We shall continue using the same tidal prediction form that we had used for secondary ports in the European waters. So this tidal prediction form needs no introduction. So we shall be using it for calculations of tides. बेटा, if you want to make the table, you can make it in your notebook. यही टेबल हमारे वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 में भी यूज होता है, सेम टेबल. So you can make this table in your notebook. Let me know once done. बना ली सर. Very good, beta. Let's proceed. At secondary ports in non-European waters as well. So we have the first part of the tidal prediction form. Obviously, this will be filled up from the data for the standard and the secondary port. The relevant data is already on the screens. So the standard port happens to be Bombay 4359. We fill it up here. What do we need? We need the time and height of high water and low water. At which port? We need it at the secondary port, that is Navalaki 4331. So we fill it up here. The date on which it is required is 10th April 1992. The time zone at Navalaki is here. It's minus 0530 hours. So we go to the next part of the tidal prediction form, which talks about the applicable time and height of high and low water at the standard port. Since we need it for 10th April at Navalaki, as said earlier, we shall just glance through. Okay. So beta, you can see the Bombay port data for 3 dates, 9, 10 and 11. अब बेटा आप मुझे बता सकते हो कि हमें कौन कौन सा टाइम पिक करना पड़ेगा. 10th में 3 टाइम दे रखे हैं, इनको छोड़ के और कौन कौन सा टाइम पिक करना पड़ेगा. 9th का या 11th का कोई टाइम आएगा बेटा? हैव ए लुक एट द टाइम डिफरेंस. 2246 वाला आएगा सर. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. सो यू आर राइट. 9 को जो 2246 वाला टाइम है, आप देखोगे हमारा जो टाइम डिफरेंस है दैट इज क्लोज टू 3 आवर्स. 250 to 330 is the range. So जब हम 2246 में ये टाइम इंटरवल को ऐड करेंगे तो ये 10th डेट में शिफ्ट हो जाएगा. सो 2246 आएगा और 10th के तीनों टाइम्स आ जाएंगे. एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस बेटा? यस सर. वेरी गुड बेटा. लेट्स गो. Tides one day before that. एक क्वेश्चन है सर यहाँ पे. हाँ बोलो बेटा. सर मान लो कि हमें 10th में 4 टाइम दिए होते, 22 समथिंग कुछ टाइम होता नीचे लास्ट में 4th वाला, तो उस केस में मैं 11th में कर सकता हूँ ना? ओके बेटा. तो तुम बेटा मुझे बताओ कि 10th का जो लास्ट टाइम दे रखा है वो कौन सा टाइम दिया हुआ है? कोई भी टाइम ऑफ योर चॉइस बताओ. 2230. ओके.
22:30 दे रखा है। अब हमें पता है कि 22:30 टाइम को अगर हमने पिक किया और उसमें हमने मिनिमम जो 2 आवर 50 मिनट का इंटरवल है वो डाला, तो वो नेक्स्ट डे में जंप होने वाला है, तो वो तो 11th डे में आ जाएगा नवलखी के लिए, राइट? यस सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, मान लो किसी भी केस में ऐसा हो सकता है 4 से ज्यादा भी इंटरवल बन जाए? 4 से ज़्यादा टाइम आपको आई डाउट बेटा, 3 टाइम तो हो सकते हैं, बट 4 से ज़्यादा टाइम जो है, आई डाउट कि आपको 4 से ज़्यादा टाइम कहीं पे मिलेंगे। यू विल नॉट गेट इट। ओके सर। कोई 1% चांस समवेयर बेटा, किसी न किसी पोर्ट में अगर कोई ऐसी स्पेशल कंडीशन आ जाए तो ये चीज़ हो सकती है, बट वेरी वेरी रेयर बेटा। आपके 3 टाइम तो हो सकते हैं किसी भी पोर्ट में, पर 4 होना इज वेरी वेरी रेयर, वेरी रेयर। ओके बेटा, क्लियर? ओके सर। यस सर। ओके, लेट्स मूव अहेड। Now, if you see the time difference here, it's at the secondary port, the tides are lagging behind by about 3 hours. So if you apply plus 3 hours here, you see that the tides that shall be applicable to us would be this one, that is low water at 22:46 on 9th of April. And then you'll have these 3 tides. Why? Because if we apply plus 2 or plus 3 hours to this one, this will go to date 11th. We are only interested in tides on 10th April. So now we have the low water at 22:46. Height of low water is 2 meters. We have a high water at 0400 hours. Height is 3.3 meters. We have a low water at 10:20. Height 1.3. We have a high water at 17:49 and height is 3.7. Next, we have to algebraically subtract the seasonal correction at the standard port, which is Bombay. Here is the seasonal change table. Bombay number is 4359, which lies in this range, 4355 to 4363. So what is the seasonal correction you are getting beta for April? सर बोलो बेटा। सर पिछली स्लाइड करोगे, वो जो टाइम देखना था सर। ओके, पीछे वाली कर देता हूं बेटा, ये लो बेटा। पिछले 2 to 4 6 इसलिए क्योंकि आगे 3 है, तो पिछले का लो ले लिया। नहीं बेटा, नहीं, इसलिए नहीं लिया है कि आगे 3 है, हमें उसके 4 बनाने हैं, नहीं, इसके लिए नहीं लिया है। हमने इसलिए लिया है, आप इनके टाइम डिफरेंस देखो, नवलखी के जो टाइम डिफरेंस यहां दिख रहे हैं आपको, क्या टाइम डिफरेंस है बेटा? सर 250 का है और है 330 का। वेरी गुड। मिनिमम अगर मैं 250 का टाइम भी ले लूं, 2 घंटे 50 मिनट, मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा बॉम्बे के टाइम में, करेक्ट? अगर मैं इसे बॉम्बे के टाइम में ऐड करता हूं, 2246 के टाइम पे अगर मैं 2 आवर 50 मिनट को ऐड करता हूं, तो मुझे बताओ ये जो टाइम आएगा ये 9th डे में आएगा या 10th में चला जाएगा? सर ये 10th में आ जाएगा। राइट, और हमसे उसने 10th के टाइड्स निकालने को बोला है, इसलिए हमने 2246 को इंक्लूड किया है। ये सर MHW के टाइम डिफरेंस से हमने लिया है, उसको ऐड करना है, तो फिर तभी ऐड किया इसको, नेक्स्ट डे में आ गया 10th में। राइट बेटा, राइट। एक्चुअली इस केस में जो 2246 पे लो वाटर है, अगर आप देखो 2.0 मीटर, इट इज द लो वाटर। इस केस में जो एडिशन होगी वो 3 आवर 30 मिनट की होगी। ओके, मैंने तो दोनों में से मिनिमम फिगर पिक कर ली थी कि कोई भी अगर होता तो हम तो नेक्स्ट डे में जा ही रहे थे, बट एक्चुअली इस केस में जो ऐड होगा वो 330 आवर ऐड होगा, और जब इसमें ऐड होगा तो ये 10th डेट में चला जाएगा। ठीक है सर। ओके,
Very good, beta. So we come to the seasonal correction now. What is the seasonal correction for Bombay, beta, in April? Sir, 0.0. Very good. 59, which lies in this range, 4355 to 4363. Month in question is April. Obviously, the seasonal correction for Bombay happens to be 0, and we apply it here. Since it's 0, it may not make any difference, but please remember, we have to algebraically subtract the seasonal change for the standard port. Next are the differences in time and height. Let's deal with the time difference first. This data for the standard and the secondary port we are already familiar with. Now here is the time difference for the mean high water. ओके सो अब देखो बेटा, हमारा हाई वाटर का टाइम था 0400, ये पहला हाई वाटर है। दूसरे हाई वाटर का टाइम था 1749। अब यहाँ पे इन्होंने हाई वाटर के लिए एक ही करेक्शन दे रखी है, वो है +2 आवर 50 मिनट। इफ यू रिमेंबर ATT 1 में बेटा हमें कितनी करेक्शन दे रखी थी उन्होंने? 4 सर। हाँ, 2 करेक्शन थी और 4 टाइम थे ऊपर, और नीचे 2 करेक्शंस थी। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही करेक्शन है। सो यहाँ पे आपको कोई भी इंटरपोलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी हाई वाटर टाइम होने दो, उसमें हमेशा 2 आवर 50 मिनट ही ऐड होगा। सो क्वेश्चन सिंपल हो गया? यस सर। राइट, सो लेट्स ऐड इट, which is +2 hours 50 minutes. Unlike the European waters, where this time difference was to be interpolated, here we do not need any interpolation. It's for mean high water. So the time difference for mean high water is +2 hours 50 minutes. So we apply +2 hours 50 minutes of time difference. You can see high water is here, so time difference +2 hours 50 minutes. High water is here, time difference is +2 hours 50 minutes. बेटा दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन ATT 1 एंड 2-3। 1 में हमें टाइम डिफरेंस के लिए इंटरपोलेशन करनी पड़ती है, 2 एंड 3 में हमें टाइम डिफरेंस के लिए कोई भी इंटरपोलेशन नहीं करनी पड़ती है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। सो लेट्स प्रोसीड। Exactly the same way, we have the time difference for mean low water, and the time difference happens to be +3 hours 30 minutes, which obviously will be filled in here. And also at the next low water out here, the time difference happens to be +3 hours and 30 minutes. Now we come to the height differences from the same data. It's more or less similar to what we did in secondary ports at the European waters. इफ यू लुक एट हाइट डिफरेंसेस बेटा, ये बिल्कुल सेम है जैसा ATT 1 में था। हमें उन्होंने 2 हाई वाटर दे रखे हैं, 3.3 एंड 4.4, दोनों के लिए अलग अलग करेक्शन है। सो हमें अपने हाई वाटर के लिए इसे इंटरपोलेट करना है। सो एग्जैक्टली सेम एज वी डिड इन ATT 1। We have the height difference for mean high water spring and mean high water neap. We can make a table out here. You can see at the standard port, when the mean high water spring is 4.4 meters, the height difference at the secondary port is +2.8 meters. And when at high water, its mean high water neap and height is 3.3 meters, the height difference happens to be +2.9 meters. And now for our height of high water at the standard port, we shall interpolate as well as extrapolate if the need be. What is our first high water? Let's see. Our first high water is 3.3 meters. That 3.3 meters is same as mean high water neap. Obviously, the height difference shall be +2.9, and you can see +2.9 coming in here. So beta, is this okay up to here? This was simple. It was matching with one of the values.
Yes, sir. Very good. What is our next high water? It's 3.7. So can you tell me, beta, what should be the figure for 3.7? सर 2.9 ही आ रही है, बहुत कम डिफरेंस है. That's right. The difference between 2.8 and 2.9. So nothing, no difference, almost 0.1. Right. 3.7 shall lie between 3.3 and 4.4. We shall interpolate, and the height difference comes to plus 2.9, and that gets filled in here. Exactly the same way, we shall deal with height differences at low water. We have the height difference for mean low water neaps and mean low water spring. So we replicate a similar table out here. When its mean low water neap at the standard port is 1.9, the height difference is 0.2 meters plus 0.2 meters. When its mean low water spring of 0.8 meters at the standard port, the height difference happens to be nil. What is our low water? Our low water is 2 meters. Where would it fit in? It would fit in somewhere here. So it needs extrapolation. When we extrapolate, we get the height difference to be 0.2 meters plus 0.2. That gets filled in here. Our second low water is 1.3 meters. 1.3 meters will fall between these two. And when we interpolate, we get the height difference as plus 0.1 meters, which gets filled in here. All okay up to here, beta? All clear? Sir. Very good, beta. Let's proceed ahead. Lastly, we have to algebraically add. Please back, sir. बोलो बेटा. Please back करना सर, वो लिख रहा था सर. Okay, okay. ये लो बेटा. Okay, sir. Continue, sir. Thank you, sir. Okay. Here. Lastly, we have to algebraically add, I repeat, the seasonal change for the secondary port. We have the seasonal change table. Our secondary port number is 4331 for Navalaki. 4331 would lie in this range of 4328 to 4335. Month in question happens to be April. And we get the seasonal correction as again nil. It gets filled in here. In this case, the seasonal correction being 0 may not make any difference. But again, just to repeat, seasonal change for secondary port has to be algebraically added. And now we are ready to get the time of high and low water and height of high and low water at a secondary port on 10th April 1992. You can see when the time difference is allowed for this low water at 22:46 on 9th, it becomes 02:16 on 10th of April. So we get these are the times of low water, high water, low water, high water, and their corresponding heights we get here. We can tabulate them here. The tidal predictions for Navalaki on 10th April. At 02:16, we shall have a low water of 2.2 meters. At 0650, we shall have a high water of 6.2 meters. Then at 1350, we shall have a low water of 1.4 meters. We tabulate it here. And lastly, at 2039, we shall have a high water of 6.6 meters, which gets tabulated here. So these are the times and heights of tides at Navalaki on 10th April 1992. Okay, beta. So this completes our question for Navalaki. So you see it is exactly same as ATT1 with only one difference.